Sorry, totally, we said 225 hours in next 45 days with reading research to be done in English and a total, you were giving me separately, na? ठीक है, separately बोल. Physics, chemistry में 20 chapters each you said? 11, 18, 6. 11 in biology. So 24 chapters. 18 in physics. 18 in chemistry. तो 18 and 18, 36 तो यही हो गया. Plus 11. So कितना हो गया? 47 and 6. 6 किस में है? Psychology में. तो कितना हो गया? 41 and 6. So 47 chapters. Not that all chapters are same size, but approximate at least structure बनाने के लिए. If you consider reading and research, also let's count it as 10 chapters. Jitna time? Do you, that much will be needed? है ना? So let's count that as 10. So we have 57 chapters to do in 225 hours. How much time you can give to each chapter? 225 divided by 57. Approximate number लाने थे? It's 4 to 5. Around 4. That means 3.947. so about 4 hours approximately. है ना? So that gives you 40 hours to do your research and reading. 40 hours मिलता है. 4 hours बोला तो 57. 4 and 57. Hey, 1 minute. What did I do? I only got confused. Right. We had counted 10 chapters for reading and research, no? So 4 hours for each chapter. So, so you can give, so note that down for yourself. And accordingly, the number of chapters you've listed multiplied by 4 each. So you know how many hours you can devote to each subject. One second. जाकिया कोई बात नहीं. Yes, no problem. I'll also check like क्या होता है physics और chemistry का कितना. हाँ देख किया तो अच्छा है. Very good. Very good. After studying one subject for our attention span period, we must change to a different subject, and then if you want you can come back. So अभी एक छोटा सा टाइम प्लानिंग के लिए डालना है. उसमें 2 फैक्टर कौन से सब्जेक्ट को कैसे चेंज करने का उसके लिए रखना है. 2 factors you have to keep in mind. One is certain subjects require more of left brain. Certain other subjects require more of right brain. Now, what is left brain, right brain? Studying of English will be in the way you are talking about. It's called the informal language study, what you are doing. And therefore, it is more of a right brain subject. And right brain subject does not necessarily, make you do analysis or anything. You have to grasp it as much as, you can grasp it. And overall grasping hota hai uska. And then see how much you are retaining and for how long and all that. Whereas subjects like chemistry particularly, and even in physics, if you are having already the problem solving and all those kind of things are there. So both these are predominantly left brain subjects. Psychology definitely is a right brain subject. It's more of descriptive and less of analytical thing. And so also is biology. Correct. So biology में फिर भी थोड़ा बहुत आ जाता है, but predominantly it is a right brain subject. So the 2 factors that I was telling you that you must remember is when you have studied
really speaking, one must keep at least 1.5 to 2 hours for studying any one subject. I don't know, is that your attention span? Or is it half an hour attention span? I think I can, if I'm focused, I can study at least continuously up for 1 hour. Up to 1 hour. So in that case, you keep your 45 minutes at your span. Because before you get bored with it, but you added one statement over there. If It's if I was serious so studying then ho jata tha. But abhi maybe because I have had a general change in mindset. So abhi ho jayega wapas. Okay, anyway, we will do the back of palm tapping, no? I choose to pay attention. I choose to be here and now. I choose to concentrate. ये सब करके हो जाएगा. ठीक है? Yes, and become serious because you have less time now. As I can see, the number of chapters are more than I had imagined. ठीक है? Okay. So 45 minutes, one subject. So you, just like in school, you have a timetable. 1 hour this period and 1 hour that period. घर पे भी जो टाइम है या सेल्फ स्टडी का स्कूल में जो टाइम मिलता है, सबको मिला के 45 मिनट्स का टाइम टेबल बना. इसका मतलब ये नहीं कि रिजिडली 45 मिनट्स रखना है. और एक चैप्टर के लिए तेरा कितना टाइम बन रहा है? 4 आवर्स बन रहा है. तो 45 मिनट्स के अंदर 1/4 ऑफ द चैप्टर अच्छे से स्टडी करके हो जाना चाहिए. एग्जैक्टली रिजिडली वो नहीं होगा, बिकॉज पहले तो तेरे को पूरा पढ़ना पड़ेगा, है ना. पूरा चैप्टर लगातार पूरा चैप्टर कंप्लीट करके पढ़ेगा तो ही वो ग्रास्प होएगा. तो फर्स्ट 45 मिनट्स यू विल प्रोबब्ली स्पेंड इन दैट. यस, यदि तूने वो फिजिक्स से शुरू किया है तो यानी लेफ्ट ब्रेन सब्जेक्ट से शुरू किया है, तो उसके बाद में चेंज करके तेरे को राइट ब्रेन सब्जेक्ट पे आना है. तो यू टेक मे बी इंग्लिश, फिर उसके बाद में वापस नेक्स्ट 45 मिनट्स मे बी यू टेक केमिस्ट्री, and then the next 45 minutes maybe you take biology. ऐसे करके एक दिन में यदि 4 घंटे तेरे को मिल रहे हैं तो ये 5 सब्जेक्ट तू रोज कर सकता है. हो जाता है ना. और every 45 minutes when you change to another subject, for 5 minutes, you need to rest your eyes and focus on your breath. As well as each time for 2 minutes, I choose to pay full attention to what I am studying. I choose to be here and now. No, something or the other. 2 minute के लिए ये करना है. About 1 minute, you have to look at a distant object in the sky or just generally at the sky. At least 1 minute that. And for that, you will have to walk from your table to wherever. 1 minute at least to look. That will rest your eyes because you're looking at close quarter. You need to do that. And then rubbing your palm and resting your eyes. If necessary, maybe splash water on the eyes. So attending to the eyes ka 2 minute ho gaya, looking at that and cleaning and splashing. Okay? So about 2 minutes you will give to your eyes. Yes, 2 minutes to your mind ko. And another 2 minutes, you will do a little stretching. 2 minutes की भी नहीं जरूरत है, 1 मिनट भी करेगा तो हो जाएगा. 1 मिनट थोड़ा स्ट्रेचिंग करने का and another 1 minute, so 6 minutes ले ले भले चल. Watching your breath. You've learned any pranayam? Which pranayam do you do? हाँ, तो अनुलोम विलोम is very good.
शीतली शीतकरी तो यदि ठंडी ये गर्म लग रहा है तो ही, नहीं तो नहीं करना. अनुलोम विलोम इज एक्सीलेंट. ओके, तो 1 मिनट के लिए ये कर ले. और यदि ये सब, हाँ, ये करेगा तो तू ये बैक ऑफ पाम 1 मिनट भी करेगा तो भी हो जाएगा. इफ यू आर गोइंग टू डू अनुलोम विलोम अलॉन्ग विथ इट, देन बैक ऑफ पाम में वर्क फॉर इवन 1 मिनट. तो 5 मिनट में तेरा ये एक 5 मिनट का ब्रेक उस बीच में लेना है. हाँ, अनुलोम विलोम इज बेस्ट. 1 minute of Anulom Vilom instead of watching that. No, watching breath या अनुलोम विलोम, whatever. But one of the two, यानी ब्रेथ के साथ में कुछ तो करना है. एक ब्रेथ के साथ में कुछ करना है, बॉडी के साथ में कुछ करना है, आइज के साथ में कुछ करना है, और ये मन के साथ में बैक ऑफ पाम करना है. So there is a constructive 5-minute break, which is not really a break, but it's a refresher. In addition, before changing a subject, drink a couple of sips of water. क्योंकि जब हमारे को बॉडी के अंदर पानी की यदि कमी हो जाती है ना, तो कंसंट्रेशन खराब होता है. So having something to drink is very, very essential. तो भले पानी पी, नींबू पानी पी, या कुछ और शरबत वरबत है, या जूस पीना है, या कुछ सूप वगैरह है, but don't spend too much time on that. But definitely drink something. है ना? तो the switch over चेंज करने का जैसे बोला था ना अपन ने उस दिन भी, स्टॉप होके फिर टर्न, तो ये वैसा है. And it will be rejuvenating, and your mind will be fresh to pay attention to what you're going to do. And at no point of time you need to be vague कि हाँ मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि लगने में क्या होता है, बहुत सारी एनर्जी जाती है. तो अभी लगना नहीं है, तूने तेरा टाइम टेबल बना रखा है, उस टाइम टेबल के हिसाब से जाना है. लेकिन ये मैंने तेरे को एक फैक्टर के हिसाब से बताया, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन के हिसाब से. While you will do this for some days, 3-4 दिन इस प्रकार का टाइम टेबल एक बना और उसको फॉलो करके देख, and then you give me a feedback. If it is working well for you, I don't need to tell you the other factor. Only if there is any kind of internal difficulty that you are facing. चेयर हिलाना बंद कर. तूने चेयर बदली नहीं किया. You don't have a chair which doesn't move. हाँ, तो उसके ऊपर पिलो या सीट कुछ रख के और tell your dad to get you another chair. This is absolutely wrong chair for you, because as it is तेरा यहाँ पर है फ्लक्चुएशन और ऊपर से बॉडी फ्लक्चुएट करता है. तो बॉडी यदि हिलेगा तो माइंड स्टेबल तू नहीं कर सकेगा. That's not true for everybody, but for you it is. You have to hold your body firm. And just now I find that is an additional means of distraction for you. So please get out of it. Huh? Okay, if you want, you'll just tell your dad. Let him get you a new chair, which doesn't move. It should be firm. बहुत जरूरी है, because half of your distraction is kind of increasing with that. यानी जो है वो तो ठीक, उसको ठीक करे, या चेयर वो लॉक होती है, मूव नहीं हुए ऐसा, तो वैसा करते. Because this is absolutely very unhealthy for you. क्योंकि आधा तेरा ध्यान फिर वो चेयर को स्टिल रखने में जाएगा. I don't want you to do that. That's not needed. है ना? हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी कंप्यूटर पे बैठता है, काम तो इसके ऊपर भी करना ही पड़ता है ना. तो क्यों आधा अटेंशन देना है? Just now you don't want to waste time, no? So try. Okay? So ये करके देख, और समझने के लिए और कुछ पूछना है? How to go about this? Yeah, it seems to be clear. It seems to be clear, but like एक चीज पूछना, I want to like
max to max, you should do like 2 subjects per day. Okay. Focus on 2 subjects or so per day. Okay. Obviously, just selecting. So you should focus on few subjects, or you can do a lot of subjects together. It varies from person to person. If your attention span means you क्या होता है, if your attention span is short and you go by this theory of doing only 2 subjects a day, up to whatever is your good attention span, which you say कि 1 घंटे के बाद में जाता है, इसलिए मैंने उसको 45 मिनट से रखा है, क्योंकि वो लास्ट में वो टेपर होते होते फिर जाता है ना? तो 45 मिनट्स के बाद में मुझे लगता है तो यदि जो भी स्टडी कर रहा होगा उसमें तेरा इंटरेस्ट कम होता जाएगा और उस समय जो ग्रास्पिंग होना है वो उतना होगा नहीं. हाँ, because your attention span is like this, I am suggesting this. But if you were the kind कि एक बार ले लिया तो उसका पूरा करके ही छोड़ता हूँ, फिर 2 घंटा निकल जाए चाहे 3 घंटा निकल जाए, वैसा नहीं है तेरा, तो तेरे लिए वो फ्यू सब्जेक्ट्स वाला थियोरी नहीं अप्लाई करता. वो लाइक कभी-कभी वैसे होता भी है. Sometimes when कुछ happened or I was emotional turmoil, तभी I just took my biology textbook, I took my notebook, and when I just kept writing textbook से notebook में I kept writing ऊपर से 12-13 pages मैंने notebook में fill कर दिया और तभी मेरा attention full हो गई. That's not attention. Sorry, that is only trying to do away with that turmoil, and you are only blocking it, and you are not paying any attention at all. Whatever you have noted in that, over here it is filtered and not even 5% remains with you. That is not called studying. That is time pass, or it is kind of managing emotional technique. So for that, if there is any emotional turmoil, any day, just call me up. Yeah, at least sorry, forgive, thank you, I love you, कर लो. Get that out. But in that state, having to वो लिखने वगैरह का ठीक है, काम में तो आएगा. But that is not your study. That is not counted in these 4 hours. You have to be in a neutral state of mind. Yes, you have to be attentive totally. है ना? तो शुरू करने से पहले भी ये जो रिचुअल 5 मिनट का बताया है तेरे को चेंज ओवर के लिए, स्टार्टिंग में भी करने का, एंड में भी करने का. तो you will find yourself being truly productive. You've used that word productive so often in these 3-4 conversations that we have had. So you have to become productive now in the true sense, not in only your meaning it. Okay? Fine. So you will make a blueprint of this timetable and send me a copy of it also. And see from आज बना लेना, कल से इसको फॉलो करना शुरू करना. 2-3 दिन जब करेगा तो तेरे को समझ में आ जाएगा how much it is possible for you, या कहाँ मुश्किल आ रही है, and then we will adjust it. Also, we will see how finer adjustments can be done when it just so happens that your attention span improves during this period with all the other things also that we are doing. How to change this plan. Okay. Sometimes you might need to change it for the demand of that chapter. You know, एक subject के सारे chapters ही मुश्किल हो ऐसा नहीं होता ना. Some will be short also and much correct. तो उसके कैसे adjust करना है, इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा ठीक है हो गया तो अभी उसके लिए ही था टाइम तो इसमें जाना है, ऐसा नहीं है. क्योंकि you have to be able to evaluate कि ये चैप्टर जल्दी खत्म होना है लेकिन इस चैप्टर में ज्यादा टाइम लगना है मेरे को. तो उस टाइम को वहां पर वैसे यूज करना है अपने को. सो इट इज नथिंग कॉल्ड कि टिपिकल जो टाइम लगा दिया उससे रिजिड करना है, लेकिन जो रिजिडिटी छोड़नी है वो टाइम पास में नहीं छोड़नी है.
Rigidities to accommodate the easy and the difficult topics or subjects. Sorry, chapters. Like अभी इसमें when you say timetable, I was supposed to make it for the entire month. वैसा कि अभी 4 दिन के लिए, अभी 4 दिन के लिए, because we need to assess and reevaluate ना. हाँ, क्योंकि अभी तक तेरा माइंडसेट था कि भाई 2 ही सब्जेक्ट पढ़ना है. अभी हम 5 सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं रोज, तो उसको भी तो चेंज करने के लिए 1-2 दिन चाहिएगा ना. 1 दिन तो चाहिएगा ही चाहिएगा. लेकिन लिख के लगा लेगा और उसको फॉलो करेगा तो बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, उसमें टाइम वेस्ट नहीं होएगा. नहीं तो ये फील करने के अंदर बहुत टाइम वेस्ट होता है. हाँ, ओके. Now when you've shared it, then you are accountable, no? And if you put it up on your cupboard, etc., your mommy and daddy will also check it out for you. कि अच्छा अभी तू ये कर रहा है ना, तेरा 6 से 7 तेरा ये काम करने का था, तू क्या कर रहा है, you know, ऐसा. तो गुड, एक चेकिंग हो जाता है ना, एक अकाउंटेबिलिटी आ जाती है खुद को. So you that much waste of time is prevented. चलेगा? Yeah. Okay. One last thing. I think I had asked you to keep that half an hour ka time log. Are you keeping that? Fine. So tomorrow I will want to know how is that working. Okay? So, and if you have one there, like I think it was a colleague.